Welcome back. This is lecture 5 of income from house property. And this is for June 2022 attempt, CMA intermediate. ये हमारा lecture 5 है. So last time we had done 2 problems. ठीक है, illustration 1 we had done और illustration 2 also we had done. In illustration 2, what we saw is here there was previous year of 10 months only. Okay, so which is why what we did is in illustration 2, we just took these 3 figures for only house 6. Okay, because house 6 only had 10 months, right? And we multiplied by 10 by 12 because these figures are always annual. Okay, remember that. These are government figures, always annual. But this actual rent received or receivable, this is situational. Okay, so that is the difference between these two. So then based on this, we have solved this problem, right? Now we'll go to illustration 3. So here in illustration 3, it says that when there is unrealized rent, but no vacancy period. Okay, so still no vacancy period. So when we come to vacancy period, we will need that 4-point explanation. Okay, so now here for unrealized rent, I'll just show you one thing. Okay. So if you see this was our computation of GAV table. Okay, ये हमारा computation of GAV का table था. इसमें आप 0.2 जो हमारा unrealized rent है, कभी भी देखेंगे ना, ARR minus UR, actual rent received receivable minus unrealized rent. ठीक है, in the format itself हम इसको minus करके second step करते हैं. ठीक है, okay. So basically for second step computation of GAV, here you get RER. Then in your actual rent received or receivable, you have to always deduct your unrealized rent. Okay, so this figure is what, after deducting what you get, this figure is compared and we take the higher here. Okay, now we'll go back to that problem. Okay, so find out the GAV in case of these properties let out throughout the previous year. Okay, it was let out throughout the previous year, so PY is 12 year, right? So that proportion problem is not there. So now let us see what the problem says. Municipal value is this, fair rent is this, and standard rent is this. Okay, no problem here till here. Now, actual rent receivable. Next point is actual rent receivable. Okay, now here they have given per annum. So this is why you have to use the entire previous year period. Okay, because they have used the word PA, which is per annum. So this is rent receivable per annum. If they would have not used this per annum, actual rent receivable only, if they would have put, okay, then what I would have done is, I would have thought in that case that this unrealized rent month, then what I would have thought is, the rents of this unrealized rent month are not included in this. That I would have assumed. मैं अगर ये PA नहीं होता है, PA वर्ड का सिग्निफिकेंस बता रहा हूं आपको, ये PA नहीं होता तो कितना रेंट मेरे को रिसीवेबल रहता, जो भाग गया मैं उसका तो गिनता नहीं ना. मेरा रेंट रिसीवेबल में मेरे को पता चल गया वो भाग गया है, ठीक है, वो भाग गया, उस अनरियलाइज्ड में बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ ना रूल 4 के हिसाब से, मुझे मालूम है कि वो भाग गया,
right? So basically when I'm saying unrealized rent, I'm using those 4 conditions, okay, and claiming unrealized rent. That is, I know that he has defaulted, right? So if I know he has defaulted, then in receivable will I count his rent? No. Getting the point? So this is the only catch in this. There will be nothing more than this. Just remember, only actual rent receivable is given, okay? Then only take what is receivable, okay? But here, what is given is per annum. Because they have given per annum, this means that this is for 12 months, okay? And now you can calculate unrealized rent using these ones. ये point समझ गया कि किसी को कोई doubt है इस point? Anyone has any doubt in this point? That the red line is for 12 months because they have given PA. Had they not given PA, then this first one, this would have been for 10 months, reducing 2. Okay, this would have been for 9 months, reducing 3 from 12, like that. If it was not PA, अगर PA नहीं होता तो ये जो आपको मिलने वाला है वही लिखते आप, ठीक है? जो भाग रहा है उसको थोड़ी मैं मिलने वाला है बोलूंगा, ठीक है? राइट, गॉट इट? तो बस यहाँ पे अब ये पॉइंट यहाँ समझना था इस एग्जांपल में। अब ये पीए होने के कारण हम क्या करेंगे, आपका अब अनरियलाइज्ड रेंट अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे कैलकुलेट? इज इक्वल्स टू दिस इनटू 2/12, ठीक है? मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, तो यू कैन डू इट इन द कैलकुलेटर। क्या करना है मैं बताता हूँ। इज इक्वल्स टू 120, it's whole month, 120 into 2/12, or I'll do it like this. Yeah, 120 into 2/12. Okay, this is your unrealized rent now, UR. Now that ARR minus UR will do, no, in that step 2, that will be this minus this. Understood? Now calculate for all 5 and just tell me whether these figures match. The figures I have put here. You are just calculate and tell me whether the figures are matching. Yes, sir. Okay. Matching for all? मैच हो रहे हैं फिगर्स सबके, यूआर के? हाँ सर, हाँ सर। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो आपका बेसिकली स्टेप 2 में क्या आएगा, ये 120 माइनस 20, क्योंकि ARR माइनस UR करते हैं स्टेप 2, है ना? ऊपर मैंने दिखाया था आपको यार, ये ARR माइनस UR, राइट? स्टेप 2 इज ARR माइनस UR। चलो, तो अभी नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपना RER निकाल के बताइए क्या आएगा इसका। जस्ट डू हायर एंड लोअर। इफ एनीवन हैजंट अंडरस्टूड यू कैन आस्क मी, ठीक है? अगर कि ये स्टेप सबको आ रहा है क्या, देखना है मुझे बस। हायर ऑफ दिस टू, हायर लेना है, जो वैल्यू आएगा उसके नीचे इसको रखना है और फिर लोअर निकालना है। बेसिकली टेक हायर ऑफ दिस टू, take that value, higher value, and below that put this, and then take the lower of the two, that is RER. So you can do, I'll just show you the solution. Okay, so is RER matching for everyone? Just tell me this one. These figures are matching. किसी को भी रिपीट करना है तो मैं कर दूंगा, ठीक है? बता, बोल दीजिए। क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क, 5 times 10 times पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। As long as you are with me, you are revising from the videos. If you don't understand, you can just feel free and confident to ask, okay? If required, मैं one-on-one भी सेट करूंगा आपको, कुछ डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है।
but you should just be free and ask. कुछ भी हो, there is nothing which is a wrong doubt. कभी कभी हम छोटा डाउट समझते हैं, उससे बहुत लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाता है, इसलिए जरूर पूछेंगे डाउट्स कुछ भी हो. We have doubts, please do ask. Okay, if RER figure, I'm waiting. Just tell me if you are all agreeing with my RER figure. That's all 5 houses. Sir, clear. Clear? Okay. Everyone? Clear for everyone? Matching, sir. You compute. If you're computing, you compute. Because this is from where we will proceed. है ना, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कीजिए. Just confirm once done. Okay, I have only one confirmation so far. Yes, sir, done. Okay. So shall I proceed then? Yes, sir. So this is your RER. Okay. Now RER हमारा आ गया. Okay. Now next is ARR minus UR. तो ये हमने कैसे निकाला, मैंने जो बताया था यहाँ हमने किया ना. आपको देखिए this line minus this line करना है आपको. ये कीजिए, just do this line minus this line and see whether these figures are matching. Matching, sir. Matching. So now what we have to do is higher of these two, and see if this is matching. Yes, sir. Okay, perfect. ठीक है. तब तो ये एग्जांपल था. इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, so this is fine. So यहाँ पे हमारा 3 illustrations हो गए. We'll go for illustration 4. यहाँ पे vacancy period है. Okay, तो हम लोग ये देखेंगे, आप समझेंगे यहाँ पे कि वैकेंसी वाला जो है क्या करना है हम. ठीक है. So this will try to finish this problem. So vacancy वाला जो part है ना, that is little bit complex in this computation. ठीक है. तो हम लोग ऊपर जाएंगे फिर से, वहाँ step 4 वहाँ से देखेंगे. We'll see, right? And then I'll bring you to this problem. Okay. Once we do this problem, for problems other than this now, we will have to be sure about what we are doing here. Okay. Which is why we will close after this problem. Okay. And then you will have to revise these 4 problems. And then tomorrow in the next session, we'll be able to finish everything. Okay. So your understanding this problem is very critical for moving forward. So चलिए अभी देखते हैं, हम बताता हूँ मैं क्या वो बोल रहा है. ठीक है. जब कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ये है हमारा. ठीक है. ये हमारा स्टेप 1 था जो हमने देखा. स्टेप 2 हमने देखा. ठीक है. ये भी आ गया. अब स्टेप 4 जो है ये क्या बोलता है, इफ ARR माइनस UR. स्टेप 4 says if ARR minus UR, okay, is lower due to vacancy. So lower यानी किससे, ARR minus UR को कंपेयर किससे कर रहे हैं? We are comparing ARR minus UR with what? RER, correct? With this we are comparing. So ARR minus UR is lower due to vacancy. Okay, then ARR minus UR in step 2 will be GAV. ठीक है. तो ये बोल ये रहा है कि अगर आपका वैकेंसी होता है, ठीक है, लोअर ड्यू टू वैकेंसी आपको कैसे पता चलेगा ये मैं बता रहा हूँ. ठीक है. RER है, सपोज RER आपका है 10,000. ठीक है. अब ARR माइनस UR जो है आपका आ रहा है 8,000. ठीक है. RER is 10,000. ARR minus UR is 8,000. ओके. लेकिन किराए में आपका ओवरऑल कितना वैकेंसी था? वैकेंसी इक्वल्स टू 4 months.
है ना, 1000 रुपए पर मंथ किराया पकड़ लीजिए, ठीक है, 8 महीने का 8000 मिला, नहीं मिला कितना, 4000, ओके, व्हाट आई डिडंट गेट इज 4000, ओके, इतना समझ गया ना, दिस एग्जांपल you got it. Here what I'm saying is this is ARR minus, so this is your RER, ठीक है, this is your RER. Now your ARR minus UR is 8000. So यहाँ पे मैंने बोला ना, जो मिल रहा है वही लिखेंगे आप, वेकेंट था तो वो तो इसमें आएगा नहीं, है ना, तो ARR minus UR will be 8000, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि ये जब कम है, इसका और इसका हायर देख रहे हैं ना, अब ये स्टेप बोल रहा है आपको कि इफ ARR minus UR यानी 8000 is less because of vacancy, वैकेंसी के कारण कम है, नहीं तो ज्यादा रहा रहता, अरे नहीं तो कितना रहता, वैकेंसी नहीं होती तो कितना रहा रहता, 12,000 रहा रहता, 12,000 रहा रहता, करेक्ट। तो यानी ये पॉइंट सही हो गया कि ARR minus UR is less because of vacancy, ओके, देन इसको लेना पड़ेगा आपको, ये कम भी होना, दिस विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, जैसे जो बहुत इजी वर्ड्स में, तो ये जो है ये आपका ARR minus UR है, ठीक है, ARR minus UR, ये जो है उसका बड़ा भाई है, दिस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ ARR minus UR, why? Because it is showing plus vacancy, it is showing ARR plus vacancy, which is why this is elder brother, okay. So you have to use elder brother only for comparison, so you have to use this elder brother only for comparison with this, okay. So compare with elder brother, if this is more, okay, if this is more, then take this as the final value, okay. This is more equal or more, if this is equal or more, okay, take this as the value, but if this is less, then take this as the value. This is what you have to do. तो इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आज इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन करेंगे तो ये पॉइंट जरा एक बार आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे के प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं अभी, ठीक है, सो विल गेट टू नो, अंडरस्टूड, समझ गए ना आप कि क्या लॉजिक इसका है, इस तरीके से आपको देखना है इसको, ठीक है। सो मैं इंग्लिश में एक बार समझा देता हूँ फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। See, this is your ARR minus UR. Sorry, this is your RER. This is your RER. Next, just see what is your ARR minus UR. It is this. Now find out the elder brother of this. Elder brother is, now this will have vacancy. This is without vacancy. Okay, elder brother will always be bigger. So this is the elder brother, including vacancy. Okay. So if ARR minus UR is less because of vacancy, to find that out, you have to first find out the elder brother and compare elder brother with RER. Okay, if elder brother is equal or more, then this will be GAV. If it is less, then this will be GAV. That's it. Okay. So let's do that problem. We have a little time. We can probably finish problem 4. There is a vacancy, but no unrealized returns. That's fine. So now let us see what all is given here. GMV is this. Okay. Fair rent is this. Standard rent is this. Straightforward. Okay, no problem till here. We know what to do. Next, actual rent, again see per annum has been used here. Okay. Okay, so this is again because per annum word has been given, so it is for 12 months. Okay, because wherever they use that word per annum, then take it for 12 months. Right? If they have not used per annum, then I would have excluded this vacancy period. I would have considered this violet line as 11 months rent here for this. If PA was not there, and if PA per annum नहीं दिया होता, तो मैंने इस लाइन को जो है वायलेट लाइन को 11 महीने का रेंट में कंसीडर करता, तो वो एक पर एनम वर्ड ने उतना डिफरेंस कर दी, ठीक है, वो याद रखना है। सो राइट, एंड दिस इज वेकेंट, दिस प्रॉपर्टी एलिमेंट्स, दिस इज द वैकेंसी पीरियड। ओके,
So let us now see. So now in this case, जो आपका elder brother is this. ठीक है, elder brother is already given for you. Okay. For our case, what we want is for ARR minus UR without vacancy, right? That is our original step to rent. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसमें मैं क्या करूंगा, 11 महीने का निकालते हैं क्या? We'll take this for 11 months. Okay, just calculate with me into 550. 550 and here others quickly just calculate and see. So I'm saying 11 ARR without vacancy. This ARR without vacancy, right? This is our original step. Okay, here they have given in problem, they have given 12 months. That is another thing, but we will go by our steps. So this is our elder brother actually with vacancy. ठीक है, ये हमारा बड़ा भाई है जो विथ वैकेंसी वाला है, हम विदाउट वैकेंसी निकालेंगे. ठीक है, तो ये फिगर्स मैच हो रहे हैं क्या? आप देखिए, बताइए जल्दी. ये फिगर्स मैच हो रहे हैं आपके? कैलकुलेट करके देखिए. सर सेकंड वाला नहीं हो रहा है सर. 675 आ रहा है. हाउस 2. सेकंड वाला 675 आ रहा है. अच्छा, सब कुछ भी मैच नहीं हो रहा होगा आपका इनफैक्ट, क्योंकि मैंने हाँ सर, हाँ सर. गलत इनटू दिस इज 550. वाला कुछ है और गोली वाला आ गया. Second, third one will be 250. अब होगा एक मिनट. अब देखिए हाइलाइटेड लाइन म्यूट Matching. No matching sir. म्यूट कीजिए जिसके घर से आवाज आ रहा है. हाँ, ओके. No matching sir. क्या? ओके, परफेक्ट. तो ये हो गया हमारा ARR माइनस UR. ठीक है, तो चलो अभी अपन इसको करके देखते हैं. ये तीनों का आप चलिए GMV निकाल लीजिए जल्दी जल्दी. RER निकालिए, RER हायर लोअर हायर करके. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को RER निकालने में? हायर लोअर हायर, उसमें हायर और लोअर यूज करना है RER में. ये दोनों का हायर निकालना है, जो फिगर आया उसकी साइड में ये डालिए नीचे और फिर लोअर निकालिए, बस आपका RER आ गया. सो यहाँ पे चलिए सोल्यूशन में चलते हैं अभी. ठीक है, ये हो गया RER हमारा. ठीक है, देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मैंने वो निकाला, जो हमने निकाले थे वो डाला है. ठीक है, सो दिस इज RER. देन इन स्टेप 2 व्हाट वी हैड कैलकुलेटेड डाउन, आई हैव यूज्ड दैट, this one. Okay, this one, right? And any doubt just ask me. Okay, I'm just assuming that you are following it. तो ये होने के बाद अभी अब देखते हैं ना, अब देखेंगे. ठीक है, क्या था, व्हाट इज दैट सेंटेंस कि हाँ आपका जो है वैकेंसी है ना, तो बड़ा भाई कौन सा है आपका, उसको यहाँ डाल. ये स्टेप 4 में के लिए ये डाल दीजिए. क्या डाला है मैंने स्टेप 4 में? I have just put this elder brother डाल दिया ऐसे ये. ठीक है, this line I have put in step 4. So अब देखना है आपको कि, ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं. ठीक है, इसमें just see RER जहां पे if this is more. ठीक है, ये तो विदाउट वैकेंसी मोर है, तो वैकेंसी बड़ा भाई तो और भी ज्यादा होगा. करेक्ट, without vacancy itself this is more than this, then when you add vacancy it will be more, still more. Correct. So jo whichever is greater, यहाँ पे if this is more just write it first. Okay, in this case also this is more 675, so write it, no need to do anything. Now here this is less, if it is less you have to check the elder brother. ठीक है, so elder brother क्या है यहाँ पे 300 है. ठीक है, elder brother is more. Correct, ये elder brother is more than this. ठीक है, so if it is, मैं मतलब अगर if it is equal or more then take this.
ओके, इट्स इक्वल और मोर देन टेक दिस. सो ये आपका जो नीचे रहेगा 250 विल बी योर GAV इन दिस केस. ठीक है, यहाँ नीचे देखेंगे आप, देखिए 250 इज द GAV. Okay, now take one more. See, this and this is less. 220 is less, right? Than 225. And what is elder brother? Elder brother is 240 is more, correct? Then take 220. So I have taken 220. Okay. Here again 180 is less. Okay. Elder brother is 250, 216. So it is not lower because of elder brother, right? That's why I will take 250 here. Okay. Again here 240 and 220, and this is also this is 240. So equal or greater, in both case I will take this. So it is 220. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार घर में जाके एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से. ठीक है, मैंने स्टेप्स बता दिया आपको. इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम में ये स्टेप्स यूज करेंगे. इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास अभी नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा रिविजन का टाइम मिले इसमें. ओके, तो इसको रिवाइज कीजिए, और कुछ डाउट्स वगैरह रहा तो यू कैन आस्क मी. आप मुझे यू कैन पिंग मी एज वेल. ठीक है, तो ये इसको समझने की कोशिश करेंगे आज घर में. राइट, ओके देन, थैंक यू. आई एम क्लोजिंग द सेशन. ओके, Thank you, sir. थैंक यू.